इक्विटी मार्केट का जायजा लेते हैं और आज बाजार पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एंड्रू हॉलैंड साहब मेरे साथ इस समय जुड़े हैं एम्बिट से। एंड्रू, वेलकम टू जी बिजनेस। सर, फर्स्ट क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, इज दिस अ बियर मार्केट रैली व्हिच वी आर विटनेसिंग राइट नाउ, or are we into a serious buying mode, because FIs have turned positive in Indian markets from the last few weeks? I think you can't correlate the two. I mean, I think one is that the global environment's changed since the end of February, at least, and that's brought more global risk on, and that's why you've seen FIIs being buyers. I don't think I've never presumed that we're in a bear market anyway, so I don't know if it's a bear market rally or not. But I think a lot of the negatives or the more extreme views that the global economy was going into recession have kind of ebbed away in the last few weeks, and more thinking towards where it's just a global profit recession where valuations have to come down. And I think that's where we are at the moment. But I think now we've all can look at fundamentals a little bit more calmly. I think we will go and address or readdress what Mario Draghi said last week, which is still unnerving me a little bit, because he virtually said, I have nothing left, I can't reduce interest rates anymore, I don't really have any bigger arsenal to come out and feed the market. So I'd like to see how the markets react to that. Now the euphoria might have died away from that, from that initial liquidity jab for the markets, but it didn't sound very good. And when you go from inflation targets in December of 2015 from 0.9% to 0.1% in 2 months, shows you how the deflationary aspects of the global economy are playing on Europe, and that's what scares me, is that those figures are quite large and quite meaningful in terms of a downside risk. So, and what is your view on the next Fed policy meet, and what Raghuram Rajan can do in the next RBI policy meet? Whether we can witness a rate cut this time, or the markets are already factored in that particular rate cut? Well, given that the RBI governor has been lauding the government's fiscal policy and restraint in terms of expanding that, then he's really kind of put himself in a corner to reduce interest rates by at least 25 basis points in April, if not before. So I think that's pretty much baked in. He's been making all the right noises towards the government, so I would be very surprised if that didn't take place now. As regards the Fed, I think we'll be on hold in March. I think there's enough data points out there for them to not do anything new. But obviously with this stability in global markets and China worries about devaluation of the yuan, the odds towards June have increased a little bit more for another Fed rate high, but again, it's all data dependent. So the last few weeks point to that, but the next few weeks could obviously again push that kind of thought process towards the end of the year. I think the Fed will be on hold in March, that's for sure. चलिए, फेड की रेट बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम है इस बार. But Andrew, SEBI and RBI have come down heavily on willful defaulters. More importantly, practically SEBI has blocked all avenues of fundraising by the defaulters. What's your reaction? What's your take on the recent developments, the recent announcements that the SEBI has made? So I mean, that's obviously good news. It's good corporate governance going forward, and I think the markets will cheer that on as we go on, as the economy kind of moves ahead. I think the short-term implications is that will the banks really sit on their hands now and be even extra cautious about who they give loans to going forward? So it has a short-term negative impact as well, because you're not going to be rushing to expand your loan book if in an environment where if that for whatever reason that company becomes
a defaulter, not willingly maybe, but you know, you're going to be under the scanner within your own bank. So I expect that will have a, you know, it's what the RBI governor said, let's not go too far on this, otherwise we'll find that we're not doing anything. And I think that's a risk in the very short term, is that banks will be extra cautious. They've got to clean up their act. And you know, we can talk about the banks in terms of what they can do, who they can name and shame and so forth. But certainly for the PSU banks, you know, whether they're consolidated, not consolidated, unless you get a real new way of thinking at the top management in terms of how they do business, then you know, these problems will come back and haunt us in the future. So I think what the RBI is doing, I think if the bankruptcy code can come in, and with what SEBI's doing, I think it all moves in the right direction to get India in a better corporate governance platform going forward. But so Andrew, in the short term, are you advising clients? Are you advising your clients to buy PSU banking stocks right now? Well, we run a fund, and we're certainly not buying PSU banks. So we wouldn't be looking to buy them at these levels. They've had a reasonable kind of run from the bottom, but the problems are still there. There's nothing changed at the top. They still don't have any more new capital yet. So, you know, yes, it's been a relief rally for them, but that's all it is as far as I'm concerned. Which pockets, which sectors in the market are you looking at where you are feeling that the valuations are very attractive right now? They can give returns from 6 to 7 months perspective? So, you know, the area that we've become a little bit more, you know, bullish on is two-wheelers versus the four-wheelers. We think there's some good value out there, and that's where we've been shifting our attention in the past few weeks and past month. We think the two-wheelers offer more value than four-wheelers at this point. Right. Any pick which you have identified from the mid-cap space, where you feel that the valuation is very attractive or the earnings outlook is very positive? Any pick from the mid-cap space? Well, again, we continue to run our theme in terms of, you know, who supplies India, and I think, you know, that will continue to throw out very good companies within certain sectors. So, you know, if you're expecting the two-wheeler, the sector growth to happen, then obviously there's part suppliers to the two-wheelers who will do well as within the mid-cap space. But overall, we're looking at for the market maybe 5 to 10% earnings growth this year. You know, it's still patchy. IIP data shows you that in terms of growth. So, you know, it's not going to be across the board in terms of, you know, growth in every industry. So it's going to be very selective. So it really has become a, you know, a bottom-up, you know, kind of stock-picking market, of which some of the mid-caps, as you rightly say, will be, you know, looking reasonably valued after the first 2 months of the year. But obviously, you know, you have to still look towards what's happening globally, and you know, if that comes back to turn more negative again, then obviously, you know, mid caps will continue to suffer in the short term. So I think you have to be very very wary of just stepping into mid caps at the moment. I think there's enough value in the large caps, you know, in over the next 6 to 9 months than there are in the mid caps. But Randy, the metals have clearly outperformed the markets. Most of the metals are 20 to 25% up from their recent bottom. Are you buying metal stocks right now? No, I mean, it's a trade that we did earlier part of the year in terms of that we felt valuations have been crushed too far, and actually you were seeing more stability in global commodity prices than you were in the actual share prices. But that's been played out with that release rally that we've seen. I think, you know, with commodity prices, I'm going to talk about metals rather than oils. I think, you know, what we're seeing now is the right response from corporates globally in terms of either attacking their, you know, kind of cost base or cutting back on production. So that should stabilize, you know, commodity prices where we are today. And I don't think China is falling off the cliff that some people were expecting. So that will help as well. I think the real worry still remains around oil prices. I still think there's a fragile kind of you know, meeting of minds between Saudi and Russia and Venezuela in terms of capping output. But Iran have said, you know, please leave us alone, we'll do what we have to do.
So I think that's where I would be a little bit more concerned about where the oil price is at the moment. I'm not saying that they won't get to any kind of agreement, but it seems to me that OPEC is not the force it used to be, and Saudi's really running the show, and I'm not sure what Saudi Arabia's end game is. So I think oil prices could head lower from here actually. राइट एंड्रू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन ज़ी बिजनेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। लेकिन बाजार का थोड़ा जायजा ले तो आज चाय कॉफी शेयर्स में एकदम से तेजी देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट अभी खबर थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताई थी कि विदेशी बाजारों में दार्जिलिंग चाय के दाम जो है उसमें 10% बढ़ने की संभावना ज्यादा हो गई है और ग्लोबल बाजारों में प्रीमियम चाय का प्रोडक्ट उसमें गिरावट से फायदा हो रहा है। हैरिसन मलयालम, जयश्री टी, टाटा कॉफी, ये कुछ ऐसे शेयर्स है जहां पर आज हलचल ज्यादा देखने को मिल रही है। और कुछ स्मॉल कैप्स में स्टॉक्स जहां पर आज तेजी ज्यादा है मार्केट्स की पॉजिटिव अप्रोच में, उसमें लंबोदरा टेक्सटाइल, ये स्टॉक 2 ट्रेडिंग सेक्शन में वॉल्यूम के साथ चल रहा है और आज भी दिन के उच्चतम स्तर पे 11% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। सेस्केन में एक पॉजिटिव खबर थी कि बेजिंग की कंपनी के साथ सेटलमेंट किया है और उसका एक रिएक्शन है और मेरे ख्याल से 1.45 करोड़ डॉलर की पेमेंट जो है वो सेटलमेंट के तहत मिल रही है कंपनी को, उसका एक रिएक्शन पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर ट्रेडर्स का फोकस ज्यादा है। राजेश सतपुते साहब मेरे साथ से मौजूद है। राजेश, शुक्रिया अपने समय ज़ी बिज़नेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मार्केट्स पे अप्रोच बताएं, कितने कंफर्टेबल हैं? जो एक स्ट्रेच मिला है उसके बाद क्या अभी भी तेजी की पोजीशन बनाए? इस हफ्ते इवेंट है, फेड की बैठक से पहले क्या किया जाए? देखिए, मार्केट में हमने देखा बाजार में जो लो बना था रफली 6850 से लेके हमने एक पुल बैक देखा था 7500। जो अब अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस का डेटा देखो तो 7500 के जो पुट में और 7400 के पुट में बहुत अच्छी राइटिंग हो रही है। इट सिंपली मीन्स 7500 का जो हर्डल था वो अभी बेस के तौर पे काम करेगा और मुझे लगता है कि मार्केट का जो या निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी 7720 और इसमें जो पार्टिसिपेशन आएगा जैसे कि मुझे लगता है ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक से ज़्यादा आएगा क्योंकि उसमें बीट एंड डाउन ज़्यादा है और वहाँ पे अभी भी एक रिलीफ रैली और एक पुल बैक रैली बाकी है। सो ऑल इन ऑल द जिस्ट इज आई एम बुलिश ऑन, मुझे लगता है 7720 का टारगेट पक्का आएगा। राइट सर, पिक्स बताएं कहाँ पर खरीदारी की जा सकती है? सर ये बताएं कौन से शेयर्स हैं आपके रडार पर? देखिए, शेयर्स तो बहुत कुछ है। इफ यू वांट मी टू स्पीक अबाउट लार्ज कैप और मिड कैप? मिड कैप स्टॉक्स सर, 2 मिड कैप स्टॉक्स जो यहां से बाजार पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बाजार जहां मर्जी जाए लेकिन वो 2 मिड कैप स्टॉक्स बम्पर रिटर्न दे सकते हैं, बताएं सर। देखिए, उसमें 2 सर 1 मिनट रुकना पड़ेगा मेरे को आपको क्योंकि वेंकैया नायडू साहब बोल रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं क्या कहते हैं। उन्होंने जागरूक होके उस समय सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उन विषयों के बारे में सदन को बताना चाहे तो बताने दीजिए, अच्छा है। सर, गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से स्टेटमेंट एक गलत था। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड ए पर्सन of the stature of Mr. Ghulam Nabi Azad, who worked as a minister, chief minister and a party functionary, could make such a... चलिए, वेंकैया नायडू साहब को आप सुन रहे थे, लेकिन राजेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में कौन से स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं सर? देखिए, 2 काउंटर से पहला काउंटर रहेगा एसकेएस माइक्रो। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। 530 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। इसका टारगेट रहेगा 565 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा अडानी पोर्ट पे, जिसका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 230 और इसका टारगेट रहेगा 244 का। ओके, अदानी पोर्ट और एसकेएस माइक्रो। लेकिन एक स्टॉक जो अभी थोड़ी देर पहले मैं दर्शकों को बता रहा था और आज 16% ऊपर आ गया है, 12% माफ कीजिएगा, वो है लंबोदरा टेक्सटाइल। वॉल्यूम्स एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है 2 ट्रेडिंग सेशंस से। अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या निकलते हैं और जिन्होंने खरीद लिया वो क्या करें और क्या फ्रेश पोजीशन ऐड करें इन स्तरों पर? देखिए, लंबोदरा टेक्सटाइल जिसका इस साल का हाई था रफली 550 और जिसने लो बनाया रफली 95 to 100, सो इट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इसमें एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशंस है और यहाँ पे इट्स अ डेड कैट बाउंस। लेकिन डेड कैट बाउंस खेलने में भी मज़ा आता है अगर आपको इतना तो पता है कि डाउन साइड लिमिटेड है। तो यहाँ पे अगर आपको प्योरली 1-2 दिन के हिसाब से खेलना है तो आपको जो टारगेट मेंटेन करना पड़ेगा रफली 158 का है। अगर 158 भी निकाल दे तो फिर इसमें आप बहुत ही शार्प रन अप देखोगे रफली 240 तक। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट और एक डेड कैट बाउंस खेलना है तो 130 का स्टॉप लॉस, अगर आज के हिसाब से खेलना है तो 134 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। लिटिल पोजिशनल खेलना है तो फिर आपको स्टॉप लॉस जो है वो 120 का लगाना पड़ेगा। चलिए, लेकिन कुछ ऐसी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जहां पर दमदार रिटर्न मिल सकते हैं। अंचल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इन हाउस रिसर्च टीम से। अंचल बताएं आज का पहला स्टॉक।
शुक्रिया रज़। आज के लिए पहला स्टॉक नोसिल का रहेगा। इस शेयर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं और वे टू वेल्थ का मानना एक अच्छी पिक है और यहाँ से एक अच्छे रिटर्न देती हुई दिखेगी। पहले नतीजों की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग मुनाफे की बात करें तो वहाँ करीब 15% की बढ़त Q3 में देखी गई थी और कहीं पूरे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी करीब 22% की बढ़त देखी गई थी। एक मार्जिन में जो ग्रोथ मोमेंटम था वो दूसरे क्वार्टर में भी जारी रहा। ये दूसरा क्वार्टर था जहाँ पे कंपनी के मार्जिन इंक्रीज होते हुए दिखे, तो कहीं ना कहीं मार्जिन फ्रंट पे भी एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। साथ ही दूसरी और जो कंपनी का दहेज प्लांट है वहाँ पे क्षमता विस्तार कंपनी ने किया था, तो उसका जो अब पे आउट है वो अब अगले क्वार्टर से आता हुआ दिखेगा। वो भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से वे टू वेल्थ का मानना एक अच्छा शेयर है खरीदारी के लिए। इसके अलावा शेयर ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, करीब 30% अपने अपसाइड से करेक्ट हो चुका है और अब यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा रही है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो अपने सेक्टर में वन ऑफ द चीपेस्ट शेयर्स है ये। अगर आप FY17 का अनुमान देखें तो EPS अनुमान करीब 6 रुपये का और P मल्टीपल करीब 7.5 गुना ट्रेड होता हुआ दिखेगा, तो यानी बेहद सस्ते वैल्यूएशन पे शेयर मौजूद है। और यही कारण है वे टू वेल्थ मानता है कि इस शेयर में खरीदारी की जा सकती है नोसिल के शेयर में और आपका टारगेट रहेगा 59 रुपीज़ का। चलिए 1.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं नोसिल, इसको रेडार पर रखें। बेहतर ट्रेड है और 59 तक के लक्ष्य हासिल कर सकता है ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स के आधार पर। चल दूसरा ट्रेड बताएं आज का। दूसरा ट्रेड आज के लिए रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज है। शुगर सेक्टर से कंपनी है, ऑलरेडी शुगर काफी बढ़ेगी और ऐसी उम्मीद है कि इस शेयर में भी तेजी आती हुई दिखेगी। बेसिकली केआर चौकसी का मानना एक अच्छी पिक है और इसीलिए कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट की सलाह दे रहे हैं। नतीजे कंपनी के बेहद रोबस्ट रहे थे। मुनाफे में करीब 110% की जंप देखने को मिली थी, वहीं आय में भी करीब 22% का इजाफा देखने को मिला था। दोनों ही फ्रंट्स, एक इसका इथेनॉल कारोबार वहां पे भी लगातार तेजी बनी हुई है, साथ ही दूसरी और चीनी कारोबार जिस तरह से बातचीत हो रही है कि चीनी दाम बढ़ सकता है आगे चल के, उसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फायदा प्राज इंडस्ट्रीज को आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। एक साउंड वैल्यूएशंस पे कामकाज कर रहा है, एक साउंड सेट ऑफ कैश EPS कंपनी कमांड करती है, तो ये सभी पैरामीटर्स है जिसके चलते केआर चौकसी मानता है कि कहीं ना कहीं खरीदारी के लिए एक अच्छी बेट बन सकती है प्राज इंडस्ट्रीज में। आपके लिए अपसाइड टारगेट 102 रुपए तक का आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। प्राज इंडस्ट्रीज 102 के टारगेट के लिए और साथ साथ नोसिल, ये दो स्टॉक हैं जो आज आपको बताए गए हैं। एक अच्छी अपसाइड पोटेंशियल इन दोनों स्टॉक्स पे देखने को मिल सकते हैं। चलो बहुत शुक्रिया। एक और एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो रिको ऑटो पे नजर जरूर रखिएगा। आज भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, 3% के आसपास की बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, 32-65 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। और खबर यहां पर यह है कि अंतरिम डिविडेंड का ऐलान जो है वो कंपनी करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है जो अंतरिम डिविडेंड होगा इसका जो क्वांटम होगा 2 रुपए प्रति शेयर के आसपास हो सकता है, तो आप रिको ऑटो पे नजर रखें। और इनफैक्ट ये अभी दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब जो है वो कामकाज कर रहा है 4% के आसपास की तेजी के साथ। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए।